दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Okay, good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Today's our business opportunity is with Green Water Home. Green Water Home is by Green Water Scientific. It is an innovative indoor air synthesizer designed to improve air quality while tackling indoor carbon dioxide accumulation. Now, talking about the Green Water Scientific, the Green Water Scientific specializes in creating innovative air purification system using microalgae technology to improve indoor air quality. Today, we have the entire team of the brand Green Water Scientific, and we also have Gaurav Arora, the Vice President, Brand Work. And before we start, let me tell you all the audience that you all will have the opportunity to ask questions related to the brand, related to the business opportunity. I would request everyone to please keep on posting all your queries into the Q&A box so that we can take it up once the presentation is over. Now, I would request, first of all, Gaurav to come forward and set the context of this webinar. And then we will move on to the brand presentation and then talk about the business model. Yeah, hi. Thank you so much, Bharat, for setting up the context. And thank you, all my dear viewers who have joined today in this lovely afternoon. So, though it's a festivity season going on and we have a Ram Navami today, but I still respect your time and your interest to participate in the webinar series that we're hosting today, which is Business Opportunity Over Chai. And as mentioned by Bharat, today we have a very, very great brand which has got something new in the market, which probably you would have not heard before, because all of us have talked about air purifiers, and especially we've kept this time of the year as the launch quality air, right? So we thought that maybe you will be able to understand and relate to the concept, and you'll be able to understand, and probably you will be able to seek some kind of an opportunity in this business as a category. So this is basically a distribution opportunity with air synthesizers. I would not use the word air purifier because that's an old term now. We are now going to be into a new regime of following air synthesizer as a concept and not purifier, because that's a age-old technology. And we are going to have it from Dhruv, who is the main founder of the brand, and Mr. Sumer Mehta, who is the visionary along with Dhruv, who have actually got along in this concept and created something new, which is we are going to offer today. But before we move on to the presentation by the brand, they're going to talk about their vision, their story, the way they have conceived the idea, the way are now going to be doing it on the expansion side, and how they bring in the opportunity for you and what all it takes to become a partner, what kind of profile do we need. So before we start on that, I'd like to set one very important context. Now,
as we say that you've joined to learn about this opportunity, but it's very, very important that before we move on to any business decision or we move on to basically discuss on a particular opportunity, ask at least these 5-6 questions to yourself before you are jumping on to buying any business or you start any new business. First, the business that you're buying or the category that you're interested in, usko aap kyun buy karna chahte ho? Is it the concept that you're liking the most? Or is it the person who has actually developed that concept? Or is it the law of demand and supply that you see in that business or in that category? Or is it that you have your personal interest because you come from that field and you think that while you jump into this field, you can probably scale it to the new heights? Or is it that you want to set up somebody in your family and friends and you see a potential in them that they can probably bring in value creation in this business because they have their personal interest, or they come with that kind of education background, or they come with a family background, or they have maybe some materialistic interest in that business and they have the right resources. तो ये बहुत important है. ये question आप अपने आप से पूछो before you jump on to buying a business. Then the second question is, आप वो business कितनी जल्दी खरीद सकते हो, कितना जल्दी आप उसमें invest कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आज नहीं करोगे तो शायद कोई और उस मार्केट में वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आप उस बिजनेस में कितनी जल्दी जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. तीसरा, जो आप ये बिजनेस चूज करेंगे, इस बिजनेस से आपका विजन पर्सनल क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 2 years, 3 years, 5 years डाउन द लाइन आउट ऑफ दिस बिजनेस? आप कोई अपने लिए एसेट बिल्ड करना चाहते हो, या आप कोई अपने बच्चे की फॉरेन एजुकेशन को या उसकी हायर एजुकेशन को आप सपोर्ट करना चाहते हो, या आपके घर में कोई ऐसी मैरिज है, या कोई ऐसा पर्सनल गोल जो आपने डिसाइड किया है that you want to reach to a certain height, you want to have that kind of a corpus, you got that kind of a saving in your business, which is going to give you that comfort and satisfaction and maybe a sense of achievement. Then the fourth question is, आप किस मार्केट में वो बिजनेस करना चाहते हो? क्योंकि ये जो हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं, ये सब स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. There are 4 factors which are very important, which comes with these different 5-6 questions, as I said. Strategic thought process आप क्या possess करते हो, जिसमें आपका अपना background, आपका interest, category, concept, आपका अपना vision, आपका mission. Then comes the market. Which market do you want to do that business? उस market में कितनी demand और सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कैटेगरी की है, वहां पे किस तरीके का प्राइस बैंड पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू सेट अप अ ब्रांड लाइक ज़ारा इन अ tier 2 or a tier 3 city will never be able to prosper. क्यों? क्योंकि वहां पे उस तरीके की शायद पेइंग प्रोपेंसिटी आपको आएगी नहीं, या शायद वो जो टेस्ट वो प्रोडक्ट का है या जो सर्विस वो बिल्ड करी है उस ब्रांड ने, वो शायद वहां पे सूट नहीं करेगी, या वहां पे कोई ऐसे लोकल लाइसेंसेस चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए जो शायद आपको मिलेंगे नहीं, या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आप बिजनेस करना चाहते हो वो लोकेशन शायद जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उसका साइज ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द राइट मार्केट to do the business, you choose the right property to do the business. Then comes the operational capability. Ask this question to yourself कि आप उस business में operational capability build कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि brand आपको operational capability build करने में help करेगा? क्या आपको लगता है कि वो right talent जो आपको उस business को prosper करने के लिए चाहिए उस market में वो available है? और अगर है या नहीं तो उसके लिए आपको brand के साथ पहले thorough diligence करना पड़ेगा. You have to understand. Then you have to understand कि जो हमारे को वहां पे लाइसेंसेस चाहिए लोकल, वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी आपका ऑपरेशनल है. आपको वेंडर वहां पे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको उस तरीके का वहां पे ओवरऑल रिसोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब आपके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे. तो एक तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, एक ब्रांड की कैपेबिलिटी है, एक मार्केट की कैपेबिलिटी है. ये तीनों की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल फिटमेंट. फाइनेंस, कितना पैसा आप डाल सकते हो एक बिजनेस में? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 million, 2 million, maybe 1 billion. So that question you have to ask yourself. And then while you decide this कि आपका क्या बजट है, उसमें 50 to 60% you keep it as a capital investment. बाकी का 40%, 35% you keep it as a working capital, as a contingency fund, because any business that you start be a
to choose the right business, and we are going to help you doing all this diligence. But still, there is always a plan B that you should keep in your mind, and hence we request you to keep some kind of a contingency fund. So अगर आपका बजट है 10 लाख का बिजनेस बाय करने का, तो 6 लाख रुपए ही कैपिटल में डालो. आपका बिजनेस 50 लाख का कैपिटल एपिटाइट है करने का, 30 लाख रुपए कैपिटल में डालो, 20 lakh ka working capital rakho, and it's there in your account. And never ever go for a loan when you're going for a new business. Always start with your own income, with your own corpus. लोन में जाओगे तो आपके ऊपर लोन की लायबिलिटी आ जाएगी, प्रॉपर्टी अपनी नहीं है तो प्रॉपर्टी की लायबिलिटी आ जाएगी, तो ये दोनों लायबिलिटीज में आपको जो है बिजनेस को ग्रोथ करने में टेंशन रहेगी. सो फाइनेंशियल फिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे अपने फंड्स प्लान करोगे और आने वाले 3 से 5 साल में आपको उस फंड का कितना मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्या आरओआई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या पे बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड सो लुकिंग एट स्ट्रेटजी, लुकिंग एट मार्केट फिटमेंट, लुकिंग एट ऑपरेशनल फिटमेंट, क्या वो आरओआई जस्टिफाई कर पाएगा आपका बिजनेस, आपका ब्रांड, आपकी कैटेगरी, आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपकी ब्रांड की कैपेबिलिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आस्क दीज 5-6 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, एंड देन यू जंप ऑन टू बाइंग अ बिजनेस. सो यहाँ पे फ्रेंचाइज इंडिया की टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. और इसलिए जो भी ब्रांड हम चूज करते हैं, दैट वी लॉन्च इन आवर प्लेटफॉर्म, we do all this diligence, we do all this deliberation, and we do a lot of case study assessment with these brands and the concept that we bring in and the visionaries that we bring in front of you. तभी हम वो ब्रांड को लॉन्च करते हैं आपके सामने, आपके लिए, और फिर उसके बाद उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो. So we are looking at people today for this business which is coming from green water science. Distribution network जिनका already अगर है, they are the first ones for us. Distribution can be from food, distribution can be from electronics, distribution from maybe something to do with D2C kind of a product. तो अगर आपका ऐसा कोई already network है, it is going to be 100% merit for you to become part of this business. या कोई आपके पास रिटेल की चेन है, तो भी आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास आज 10 आउटलेट्स हैं या आपको इस तरीके का ऑलरेडी नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ है, then you can immediately use that shelf space to reach to the end consumer who is going to be the buyer of your product. अगर आप इस बिजनेस में नया एंट्री लेने वाले हो, तो आप नए एंट्री के लिए ये 4-5 पॉइंट्स अपने आप से पूछिए, और उसके बाद फिर इस बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हम आपको हेल्प करेंगे. So the today objective of this presentation is that Mr. Dhruv and Sumer Mehta are going to collaborate on this concept. For your understanding, they are going to give you all the induction. They're going to talk about why did they choose this as a category, this as a business. इसका क्या need और demand market में लगता है इनको. That is why they have invested a lot of energy and sweat into this business, and not just the money, right? Because money you can still make and break, but concept is something that you invest only when you see some kind of a merit. So all these strategy, finance, legal operations, all this set of business aspects that I've talked about is going to be covered in this journey. So buckle up yourself and keep your eyes and ears open and be as attentive as possible. And at the same time, use the Q&A box to make it more interactive, and share with us your thoughts, share with us your contact details so that we can align your meeting with the brand as a follow-up meeting after this webinar. Besides, also share the location of your interest so that we can send our local rep there for you to at least give you the first level information, probably which is not clear today, maybe after this webinar, और फिर आपकी brand के साथ हम one-on-one meeting कराएंगे. So thank you so much once again for joining this webinar in this lovely afternoon on a Ram Navami day. I request Mr. Dhruv and Mr. Sumer to come on the screen, take up the podium and give us a little induction about what this concept all about. Thank you so much once again. Hello. Firstly, like Gaurav Sir said, thank you so much for joining us and thank you for your time. So today we bring to you a brand called Green Water Scientific, and I'm just going to go ahead and share my screen for the presentation. So ये हमारा product है, it's called the Green Water Home, and with this जैसे हमने लिखा है, we wish to bring oxygen back. अब उसका exactly मतलब ये है कि अभी से 20 साल पहले तक this phenomena did not exist कि winter के months में 2-3-4 हफ्तों के लिए schools बंद कर दिए जाएंगे और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे simply because the air pollution outside is so bad.
Similarly, throughout the year, so many diseases, so many deaths have been happening now, which did not happen 20, 30 years ago because of the air pollution outside, because of all the dust that we live in, because of all the carbon emissions that have been, released into the planet and so on. So इस company के साथ हमारा ultimate end objective यही है कि अगली generation वो enjoy करे जो आज से 30 साल पहले होता था and not जो आज की डेट में चल रहा है. So with that, we'll go into the science of it a little bit. Now, one specific part of air quality, which we tend to miss a lot, is the carbon dioxide. Now, 90% of our time is spent indoors, वो चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे gyms में हो, offices में हो, hotels में हो, restaurants में हो. Point is, 90% of our time is spent indoors, and most of these environments capture a lot more carbon dioxide than we realize. कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे HEPA बेस्ड एयर प्यूरिफायर्स या HVAC सिस्टम्स, दे डू नॉट एड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल. वो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर यानी लार्जर कंटामिनेंट्स को कैप्चर करते हैं. दे आर अनेबल टू कैप्चर अ डिसॉल्व्ड गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. Now, in this, plants and trees have been obviously the one thing, जो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, डिफॉरेस्टेशन को ऑफसेट करने के लिए भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं. Except in our daily lives, let's face it, we don't have the time or the space to grow all these plants and trees and maintain them, water them every day, take care of the soil, धूप के सामने रखो. There's 50 other things that you have to do. And in the end, what happens is that we end up damaging our physiological health as well as the climate on an everyday basis. So this is where we basically come in with our product. Our mission is to bring our planet to negative emission, in which we have basically used the photosynthetic power of microalgae to capture as much carbon dioxide and produce as much fresh oxygen as 75 houseplants, which, as you can imagine, is very hard to grow in an office or a bedroom or a gym or anything of the kind. Apart from that, it also does everything that existing air purifiers do, which is filtering out the airborne contaminants, the particulate matter. And overall, it becomes a combination of all the air purification solutions that we have, except much better, and also along with that, much easier to maintain. This can lead to a lot of physiological benefits for your body, like improved productivity, better sleep quality, allergy or asthma के symptoms के साथ ये बहुत help करता है. It's good for your stress levels, your lung health, and overall mood as well. And all you have to do to maintain it is replace the culture of algae, जो हम अपनी subscription service से भिजवाते हैं, which, by the way, adds another recurring revenue model to our business plan. And sorry. And every 3 months, we send a new package of algae to your doorstep. You just have to take out 5 minutes to replace it. And again, आप 3 months के लिए good to go. So essentially, इसमें हमने कर क्या रखा है कि we found out that 85% of the planet's oxygen actually comes from algae and not plants or trees. So the whole thought behind the company was to mimic the ocean inside a home appliance, जिसके लिए हमने वहाँ का ocean का temperature copy करा, हमने उनका pH को maintain करा, हमने days and nights के day, afternoon, evening and night के pattern accordingly रखे so that the algae is getting its ideal environment and allows it to photosynthesize the air at its highest efficacy. And on our LED screen at the top, you can control the inflow and the outflow of the air. And on the right, you can see if everything is working just fine or if something needs to be, replaced or adjusted. So yes, just to summarize, air purifiers currently वो चाहे थोड़े low maintenance हो, but वो सिर्फ contaminants को filter करते हैं. They don't capture carbon, they don't produce oxygen. Plants and trees, on the other hand, contaminants को नहीं capture करते हैं, and as you know, they require a lot of maintenance. Green Water Home does all of that, and it can also be used as a coffee table, if it's next to your desk or your bed. And yes, that is about it. So that's how we plan to bring oxygen back. Perfect. Sorry, sir, you want? Yeah, hi. Thank you, Dhruv. So Dhruv, we have talked about that. What is this concept all about, right? But I would request you if you can just throw some light that how did you conceive this idea? Because it's very, very important to know your vision for every investor who has joined today. It's not that the concept is just sold. We need to know that why did you choose this as a category? You come from a telecom background. Your father has been a telecom
OEM, right? So why did you not choose to be into the telecom sector, and instead you've got into something new, which is air synthesizer, and that too, it is going to be a new concept for people to first understand. So how do you get this idea in your mind? And second question that I have for you is that how are you going to educate people about this as a concept? Because, so I'll tell you, there are 3 chronological stages which follow for any product to become successful in the market. First is that we inform people that what is this concept all about, right? Then we talk about the education part of it, that what is going to be the value creation this product. And then comes the engagement where people start to utilize it and engage it. So what strategy you have in your mind on this information and education on this concept for people outside the world who still doesn't understand the difference between air synthesizer and purifier? So right from the concept and now the product readiness, is पूरी journey को थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो. Sure, of course. So, basically, how like the reason, we started this company was, yeah, our family has lived in Delhi all our lives, and this recent change, in the air quality and the surroundings has obviously, not been easy. So, and again, on top of everything, like as an individual, this is one, issue that you end up feeling a little helpless about. Ki, I want to like do something about this. Clearly, I'm not enjoying this, but there's no convenient yet significant way for me to actually contribute to this problem that is air pollution or climate change. So initially we wanted to kind of just give some sort of tool to the individual जिसमें वो अपनी health का भी ख्याल रख सकते हैं, अपनी planet की health का भी ख्याल रख सकते हैं, all in a convenient and significant manner as well. So that was the whole emotion behind the company. Then we ended up finding out that 85% of the planet's oxygen comes from the ocean and oceanic plankton and algae, as compared to forest or trees or plants or anything like that. Accordingly, they also capture 4 times as much carbon dioxide than the Amazon rainforest. So उसमें जब हमने further research करा तो पता चला because these are microorganisms, इनका photosynthesis करने का rate और efficiency बहुत ज़्यादा high है as compared to plants, in which a lot of space and area is wasted, जहाँ पे photosynthesis हो भी नहीं रहा है. So when we found that out, and coupled with इतने सालों का narrative of to save the planet, to reduce air pollution, you need to grow more plants and trees, all of that put together, we figured, why not just grow algae instead if they are so much more efficient in converting carbon dioxide into oxygen. So that was the starting point of the company. As far as educating the world about it, educating our audience about it, uski strategy mein we have a couple of very strong ideas and directions in place. Usme one of our leading ones being जो लोग CO2 monitoring के already clients existing है, जो आज की डेट में एक बहुत growing industry है, उनके clients बहुत directly हमारे clients बनेंगे, because they are already educated about the issue, they clearly care about it, they've measured how bad the problem is, in their immediate surroundings. So naturally, they would be one of the first ones to try and want to solve it. Similarly, a lot of pharmaceutical companies around, North India, especially at this time of the year, are pushing air purifiers. A lot of physicians and personal therapists are pushing air purifiers for various kinds of reasons, whether it's, immunity related or mental health related or lung health related, stuff like that. So उन सारी audiences को भी हम target करना चाहेंगे, because again, they, already have a certain mindfulness and a certain amount of information about the problem that we are trying to solve and the solution and its benefits that we are bringing to the table. So those are some of our initial strategies. उसके अलावा हाँ, जैसे इस webinar में हमने एक पूरा story है हमारी about how indoor CO2 is something that is completely unaddressed in this day and age. उसको हम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे, and accordingly we'll hope they invest in our product too. Great. So suppose we have somebody who's willing to become your distribution network, तो आप उनके साथ कैसे इसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने आपको बताया, strategically, operationally, market, finance, all these are very important factors for anyone to become partner with any company. So concept wise, it is very, very novice. It is very, very new concept for people to first understand, relate with it. ठीक है, तो उसके लिए हमने बोला कि हम एक education strategy रखेंगे, obviously.
but how we are going to collaborate with our distribution network, how we are going to help them. Do we have some kind of a marketing fund? Do we have some kind of agency? Do we have some kind of a collateral? Do we have some kind of influential marketing? What all we have in our place, which becomes a tangible asset for us on the education side as a support system. Got it. So for sure, we have, a couple of sales employees. We also have other creative heads who are, constantly creating content and different kinds of ads for this product. Along with that, we also have two performance marketing people joining in, who will be helping in Google ads, running Google ads, Facebook ads, all of that. So, with all of that, we hope to, create a good knowledge about our brand and education about the problem in general, within the targeted market. Apart from that, as far as any distributors go, if they need some help, marketing in their local area, we would be more than happy to deploy some funds and some personnel from our team as well to, market to any specific people that they want us to focus on. Okay, great. Can we have the financial model for the audience so that they understand that what exactly it takes? What is the MRP that we have decided, and how do we plan to distribute this margin on the MRP to the distribution and retail? कैसे उसको distribute करेंगे? So can we have some kind of a deck from you? And also, I'd like to know for the audience कि हमने क्या अभी अपनी go to market रखी है, क्या strategy है हमारी go to market की, और किस तरीके का थ्रूपुट हम उसके अंदर देख रहे हैं, किस तरीके का हमें लग रहा है कि हम सेल्स अचीव कर पाएंगे. तो हमने ये एक्सेल में जरूर प्लॉट किया है, लेकिन आई वांट टू नो कि आप इसमें हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट. सो माय फ्रेंड्स, एज यू सी, यस, तो इसको एक बार हम समझते हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट टू बेसिकली बिकमिंग अ पार्टनर विद योर ब्रांड. तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे. तो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन में हम कितना एमओक्यू डिसाइड कर रहे हैं कि कितना एमओक्यू मिनिमम हमें लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को लेना चाहिए, या उसका कोई फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है. 25,000 35,000 रुपए हमें लग रहा है कि हमारा एक सिंथेसाइजर का प्राइस है जो हमारा हमने एमआरपी रखा है. एंड ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इन टाइम वी वुड नॉट विश टू give much of the discounts because we want to be focusing upon the quality sales and not the quality sales and not just the quantity sales. लेकिन उसको हम सपोर्ट कैसे करेंगे, कितना मार्जिन हम दे रहे हैं अपने. और ऑब्वियसली एक हर बिजनेस जो ये प्योरीफायर का या सिंथेसाइजर जो हमने नया टर्म अभी इनोवेट किया है, इसमें एक हमारा कुछ एएमसी भी होगा, इसके अंदर कुछ हमारे पार्ट्स भी होंगे जिससे हमारी इनकम होगी. तो वो अगर आप कुछ बताना चाहें तो. Yeah, so I think गौरव, ज्यादा डिटेल तो मैं फ्रेमवर्क के जिम्मे डालूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ. जैसा ध्रुव ने बताया कि एयर पोल्यूशन के दो कंपोनेंट रहते हैं. एक होता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जिसको हम PM 2.5 PM 10 के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. और ये कैप्चर हो रहे होते हैं प्री फिल्टर में, हिपा फिल्टर में. दूसरी चीज जो CO2 होती है, जो हम अपनी हर ब्रेथ में एक्सेल कर रहे होते हैं, जो कि आप एयर कंडीशनिंग में थोड़ा सा टॉपिक लूंगा. थोड़ा सा मैं आता हूँ फाइनेंशियल मॉडल पे गौरव, थोड़ी बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको. वो ये कि जो एयर कंडीशनिंग होती है जिसको HVAC सिस्टम कहते हैं, उसमें फिर भी हम बाहर की हवा से एक्सचेंज कर रहे होते हैं. लेकिन जो रूम एयर कंडीशनिंग होती है, स्प्लिट एयर कंडीशन या विंडो एयर कंडीशनर, 1 टन 1.5 टन 2 टन वाली जो मार्केट है, ये क्यूमुलेटिवली आज तक पिछले 20 साल की अगर आप देश भर के इंस्टॉल्ड एसी लगा लेंगे, निकालेंगे, तो वो 4 करोड़ एसी हैं. पिछले साल भर में 1.25 करोड़ एसी बिके हैं. इस साल 1.5 बिकेंगे. 2026 में इंडिया इज रेडी फॉर अ 2 करोड़ मार्केट. सो द AC मार्केट, द RAC मार्केट, रूम एयर कंडीशनिंग मार्केट इज ऑन फायर. मतलब पिछले 2 साल पहले तक पटना में जहां पूरे शहर में आपको एसी दिखता, आज वहां कोई घर नहीं है जो बिना एसी के हो. सो Tier 2, Tier 3. अब ये क्लोज स्पेसेस में जब ये इतनी सारी एयर कंडीशनिंग हो रही है, और वो भी रूम एसी वाले लेवल पे हो रही है, तो हम एक चीज साथ में कर रहे हैं, ये कि ट्रैप कर रहे हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं. मैं फाइनेंशियल मॉडल पे बता रहा हूं आपको कि इतनी ग्रोइंग मार्केट है, विच मीन्स जैसे हम फेसबुक वगैरह पे देखते हैं या किसी चीज पे अमेजोन पे देखते हैं, पीपल हु बॉट दिस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस. मैं इतनी क्लियरली देख पा रहा हूं कि आज से महीने 2 महीने बाद अमेजोन पे या मार्केट प्लेसेस पे या जगह और होगा, पीपल हु बॉट अ एयर कंडीशनर ऑल्सो आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ एयर सिंथेसाइजर. सो वी आर डिस्कसिंग सम
we are very excited and optimistic about some crazy numbers in the 1 year from today. And 35,000 की जो सेलिंग प्राइस आपने बताई, हमने जो रखी है, इस पे जो रिटेल चेन के लिए हम अपने पार्टनर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे एज परसेंटेज, तो रिटेल आउटलेट्स के लिए हमने 20% अभी रखा हुआ है. 20% हम मतलब इसमें लेके चल रहे हैं 35,000 की प्राइस पे. बट दिस 35,000 इज बेसिक, सो इस पे जीएसटी अलग लगेगा अभी 18%, which means 41,500 आ रहा होगा कंज्यूमर के एंड पे, राइट? So 20% for the retailer and 10% for the stockist. This is what we are looking at. अगर मैं 30-35 दिन में भी इसको रोटेट कर लेता हूं एज अ रिटेलर, तो मेरा पे बैक पीरियड पहली अपनी इन्वेस्टमेंट 100 पीसेस के ऊपर जो मैंने की थी, वो मेरी 1 साल के अंदर बाहर आ जाती है. फिर नेक्स्ट ईयर से हम जो भी कमा रहे होंगे उसके ऊपर 100% प्रॉफिट होगा, which means ROI from next year onwards kind of 100%. Now अगर जैसा आपने गौरव बताया भी कि कुछ लोग रिटेल चेन वाले भी इस इन्वेस्टर्स में जो इंटरेस्टेड होंगे, मैं समझ सकता हूँ. जो उनका रिटेल फेसिंग आउटलेट होता है वो उसके खर्चे ज्यादा होते हैं. सो वो 2 या 3 पीस भी अगर रख के बैठे हैं डिस्प्ले पे और बाकी अपने वेयर हाउस में रख के बैठे हैं, तो उन और एट एनी गिवन टाइम 15 पीस के स्टॉक पे अगर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. हमने पिछले 2 साल लगाए हैं इस कंसेप्ट को पीओसी करने के लिए, और पिछले 6 महीने में अपनी चूंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी ग्रो होने वाला बिजनेस है, we have put in lot of money and effort in creating a production capacity which runs into something like 100,000 pieces per annum, which means something like 400 pieces per day. So ये भी तो एक रिटेल आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक सपोर्ट है कि आप कल को अगर ऑर्डर ले आते हैं और पीछे आपका जो प्रिंसिपल ब्रांड था वो कॉम्पिटेंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, तो भी एक फेस लॉस हो जाएगा रिटेलर का. When you ask me कि हम अपने रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे हेल्प कर रहे होंगे, I consider this as an equal responsibility that we'll not let you have a face loss by committing to a customer. अब दिवाली का सीजन है, अगले 4 महीने में आप मुझसे 1000 पीस मांगिए, मेरे को 2 दिन में नहीं लगने आपको 1000 पीस देने, right? So we have created that capacity. We have spent money on that. We have spent bandwidth on that. We have created teams for that. SOPs बनाना, क्वालिटी कंट्रोल करना, और माइक्रो एल्गी के ऊपर मतलब lot of studies gone into it, and it will be a carry on process. Anything else you Gaurav, you want any specific question? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा बताया सर. एंड आई थिंक दैट वी आर नाउ एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वी आर रिलेटिंग टू एवरीथिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट, राइट? दैट व्हाई डिड यू चूज दिस एज अ कांसेप्ट एंड व्हाई डिड यू कम अप विद दिस एज अ प्रोडक्ट? आपका अपना खुद का विजन क्या है, राइट? उसमें आप कैसे सपोर्ट करने वाले हैं ऑपरेशनली, फाइनेंशियली, आप कैसे उसमें ब्लेंड करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, मार्जिन्स क्या रहेंगे, किस मार्केट को हम देख रहे हैं. ऑब्वियसली ऑल दोस मार्केट्स वेयर देयर इज अ पोल्यूशन इंडेक्स गोइंग अप, वो सभी हमारे लिए पोटेंशियल मार्केट्स हैं, राइट? सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बता दिया कि आपके पास जो है 400 यूनिट पर डे की कैपेसिटी है, विच इज बिग इनफ, राइट? विच मीन्स अगर हम आज अपने 40 डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं और 10 को डेली हम 10 जो है अपने यूनिट्स डेली भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, तो भी हम जो है सफाइज कर सकते हैं. वी कैन हैव, we are geared for that, yeah, राइट? सो वी आर गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. लेकिन इसमें एक चीज ये है कि आज हमारे पास ओवरऑल देखें तो प्यूरिफायर एज अ बिजनेस में इतना बड़ा मार्केट स्पेस क्रिएट कर चुके हैं बड़े बड़े ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो LG है या Philips है, Honeywell है, Daikin है, yeah, there are many 10, many 15 players big competing in the market, और उनके प्राइस ब्रैकेट शायद 8-10 हजार रुपए से शुरू हो जाते हैं, इट गोज अप टू 20, 30, 50,000 रुपीज. हम इसमें कैसे अपने आप को compete करेंगे? How are we going to put ourselves into that market which is already flooded with lot of chains at a micro level, at a macro level, और ये सब चाइना से प्रोड्यूस कर करके ज्यादातर बेचते हैं. तो इनमें हम जो है अपनी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करेंगे? तो इसमें नंबर 1 तो जो एयर प्यूरिफायर के प्राइसेस हैं, they run well into 80,000, 1 lakh, 1.5 lakh. So people have been spending a lot of money on air purifiers recently, especially in certain parts of India. उसमें हमने 35,000 का जो MRP सोचा है, that basically comes down to
kind of the middle ground in the sense ki on the one hand, this is a whole new technology. We are doing everything that those existing air purifiers do. Along with that, we are doing something as important as producing fresh oxygen and capturing carbon dioxide, जो unheard of है इस पूरी market space में, जो एक air quality का बहुत बड़ा significant part है, which none of the existing players currently are addressing. In spite of that, we are not, coming out with the most expensive thing on the market. We have placed us sort of in the middle of the market, and on top of that, उसमें हमारा एक additional business model जो revenue के हमको आ रहा होगा, वो हमारी subscription के through तो आ ही रहा होगा. In which case, we basically, the initial investment for a Dyson air purifier might be 90,000 or something, or 80,000. As compared to that, आपने अभी 35,000 दिए. But because, our product is doing all of these great things, it's also needing the algae's refill every 3 months. So usme, through the subscription service, we also end up getting a certain amount of revenue, and our distributors, of course, end up getting certain income from existing customers as well over, an extended period of time. Great. So हम लोग marketing का एक budget लेके चल रहे हैं, which is obviously talk about the merits of becoming partner. However, partnering, not just partnering with us as a distributor, but why product is suitable for them and why it is going to help them vis-a-vis the air purifiers. Right? तो और इसमें हमने कोई अभी at present कोई ऐसी केस स्टडी बिल्ड करी है कि किस मार्केट में हम अभी स्टार्ट करेंगे और क्या हमें पर मंथ बेसिस पे सेल्स मिलती है और कैसे हम उसमें अपना जो है प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड करते हैं, क्या हमारा खर्चा है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज क्या रहेगा, मैन पावर क्या रहेगा, कोई उस पे केस स्टडी हमने बिल्ड करी है ध्रुव? Yeah, so I hope to we proceed with all 4 channels available, which will be general trade, modern trade, offline की अगर बात करूं और अगर ऑनलाइन में बात करूं तो now it's anyone's guess. आज से 3 महीने बाद हम दिसंबर में जब ये मीटिंग ले रहे होंगे गौरव, तो हम डेफिनेटली आप हमें डेटा दे रहे होंगे कि ये आपकी 30% ऐसे गई थी और 40% ऐसे गई थी. बट बिकॉज अभी लॉन्च है प्रोडक्ट का, अभी इनफैक्ट ये बल्कि मैं आपसे समझना चाहूंगा, should we offer some kind of something special one time to first 40 distributors of ours or first 40 retailers of ours, क्योंकि पहला आईफोन खरीदने वाला और पहला कोल्ड प्रेस जूस खरीदने वाला और पहला there's so many things happening last 4 years. जैसे मैंने आपको एसी की मार्केट का बताया कि पिछले 20 साल में 4 करोड़ एसी बिके हैं, पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ एसी बिका, राइट? अब पिक अप एनीथिंग, आज अगर F&O की बात करें फ्यूचर ऑप्शन की, पिछले क्यूमुलेटिवली आज देश में 12 करोड़ डीक्वेट अकाउंट हैं, तो पिछले 1 साल में उस 12 करोड़ में से 9 करोड़ आए हैं, यानी पिछले 30 साल में 3 करोड़ थे और पिछले 1 साल में 9 करोड़ डीमैट अकाउंट. सो द सोसाइटी इज मूविंग वेरी रैपिडली टुवर्ड्स पर्सनल हेल्थ केयर, पर्सनल वेलबींग, जिसमें ये the air I breathe also is as important, and it's just the matter of crossing the line. It happens tomorrow, it happens a month from today, it happens 3 months from today. That remains to be seen, but we have got all reasons to be optimistic about that. Whenever this happens, it's going to be exponential growth, not linear growth. Absolutely, I agree. I second you completely, because any product that you launch with a new concept and new technology, it takes a little time. But yes, we can definitely add value in it with people who are becoming our first set of distributors, because obviously they are not going to get advantage on the pricing, but they'll also get a marketing support, they'll get a manpower support, they'll get the transportation support, because they are the first movers with us, and hence there is always a support extended to them a little more as compared to people who are going to fall in that race maybe 3 months or 6 months down the line. So we can discuss on these discount policies, we can discuss on something extra that we have to do while we have the follow-up meetings with all these people who have joined today in this webinar. So I request, as I mentioned in the beginning of my session, I request all of you to please leave your contact details and the location of your interest, and also the personal preference of becoming a distributor and your line of business, current line of business, so that we know that what exactly is going on in your mind and how you are a perfect suit to us in this business to make it to the next level
and how we can help you to create a growth story with this product. So for now, we have got one product, air synthesizer from the house of Green Water Scientific. We are going to add a few more product line. So the more early you are going to join, the more early you are going to create something innovative in the market and a new line of business for you. And since there is not much on the competition side exist as such on the air synthesizer, it is going to give you the first mover advantage also to create something new in the market, which people will generally aspire down the line. क्योंकि जो education strategy use करने वाले हैं brand की team from on a marketing side, या जो margins वो आपको देने वाले हैं, जो production capacity उन्होंने बनाई है, ये सब as a meritable story आपको काम करेगी, right? So I think मैं 1 मिनट लूंगा गौरव, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, हाउ विल यू कम्पीट विद द बिग ब्रांड्स? आप ये पूछ चुके हैं और हमने थोड़ा सा आंसर किया। मुझे सडनली फीलिंग आई कि मैं जस्टिस नहीं करूंगा अगर मैं बात नहीं बोलूंगा। सी, जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं वो जो भी बिग ब्रांड्स एयर फिल्ट्रेशन के नाम पे कर रहे हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड हीपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर एंड प्री फिल्टर। प्री फिल्टर हम वो सब कुछ हमारे प्रोडक्ट में कर रहे हैं। Whatever the biggest and the brightest name in the list of air purifiers you see, we are doing exactly the same thing. I mean, in addition to that, हम photosynthesis कर रहे हैं जो इनमें से कोई नहीं कर रहा है, कोई बड़ा नाम नहीं कर रहा। और यहाँ मैं जरूरी ये समझूंगा शेयर करना, क्योंकि let's have it up front. एल्गी जिसको हम बुला रहे हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक पौधा है, राइट, जिसकी जड़ें नहीं है, तना नहीं है, लीफ की वेज नहीं है। एक लिविंग बीइंग एक मशीन से डिफरेंट होता है। वो मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को डिफरेंटली बिहेव कर सकता है बाय एटलीस्ट 10-15% हियर एंड देयर फोटोसिंथेटिक रेट। नाउ मेरे पास दो चॉइस है। अभी अगर मैं जिस कमरों में मीटिंग्स लेता हूँ दफ्तरों में, वहां अगर CO2 लेवल मेरा पहुंच जाता है, जो कि रोज जाता है हमारे ऑफिस में 1800 ppm, 2000 ppm, 2200 ppm, तो जब मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो मैं उसमें जीता हूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। HVAC सिस्टम की इतनी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री एक ही चीज पे काम कर रही है जिसको बुलाते हैं वेंटिलेशन, HVAC। V इज फॉर वेंटिलेशन। वो वेंटिलेशन किससे कर रहा है? बाहर की हवा से। और वो बुलाता क्या है उसको? फ्रेश एयर। अगर वो फ्रेश थी तो सील क्यों किया था मेरे भाई? सील इसीलिए किया था कि वो फ्रेश नहीं थी। अब आप सारा दिन इसी वेंटिलेशन और क्लोज स्पेस के बीच में एक ट्रेड ऑफ बनाते रहते हो। तो सवाल ये आएगा ऑफ कोर्स किसी के भी मन में, मैं होता रिटेलर की जगह बैठा, मैं भी पूछता बड़े ब्रांड से कंपीट कैसे करोगे? मुझे सिंक इन करना है कि बड़ा ब्रांड के साथ मेरा मुकाबला नहीं है, क्योंकि बड़ा ब्रांड वो काम नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, और मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा हूं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब 10-15% हियर एंड देयर अपना बिहेवियर शिफ्ट करता है, तो मेरा हवा 1 घंटे में ठीक होने के बजाय या पौने घंटे में हो जाएगी या 1.25 घंटे में होगी, जो कि अदरवाइज हो ही नहीं रही थी। So I have two choices. Either I live with the 10%, 15% variation, or I have the solution, or I live with the CO2 that is not healthy for me. So this choice one, जैसे गौरव आपने लिस्ट बताई थी कि आप कोई भी रिटेलर अपना कोई बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आप एक डिस्क्लेमर दे रहे थे, रादर आप हेड्स अप दे रहे थे कि यार ये सोच के आना। तो मैं भी ये कहूंगा, ये सोच के आना, अगर आप बिलीव करते हो इस कॉज में कि कॉम्प्रोमाइज हेल्थ छोटे बच्चों की, घर में बुजुर्गों की, किसी की भी मेंटल हेल्थ अगर इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ अगर CO2 की उसमें आप रोल समझते हैं, मैं आपको इनफ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। आई कैन लोड यू विद एस्टैब्लिश्ड स्टडीज which will prove beyond a shade of doubt कि increased CO2 levels in an office space or a home space results in decline in cognitive skills of the staff, decline in fog decision making, etc., etc. Please spend a lot of time on that. When you are convinced, do come back to us and become part of this revolution. Thank you so much, Sumerji, for this last minute, I would say, push, because this is what gives a confidence to everybody, I think every viewer who has joined today, because it's not just a product that you have defined. It is the survey, it is the research, it is the diligence, it is the concept that you have created, and you're quite bullish about it as an entrepreneur. Because businessman is the one who is looking at investing and making the money, but entrepreneur is the one who is creating a concept which is adding some value in the market, and then obviously it has got a scale theory. So it's entirely a different ball game when you're talking about an entrepreneur and a businessman. So I can really see that
sparking your concept and sparking you from an entrepreneur mindset. And I have all my high respect for you. So thank you so much for coming on this webinar and giving us this insight and time and energy that you have spent in creating this product and now choosing Franchise India for helping you in this journey of taking this to the next level. So we're happy to be helping you and obviously the future partners who are looking at joining some part of the distribution network of our business. So thank you so much once again, everyone who has joined today in this noon and given their time and energy. And the brand side also, Sumer, Dhruv, Arpit, Sachin, everyone who has joined from the brand side. So Bharat, I request you to please take up the last notes before we end up the discussion. Thank you so much. Right. Thank you so much, everyone, for joining this webinar. Unfortunately, my battery got finished, so I have just joined with your ID, Gaurav. So that's it for the day. I would like to thank all the viewers who joined this webinar. And I would also, like to appreciate all the panelists who joined this, got some time on this festival day, and and talked about the brand and the business opportunity. I mean, these kind of webinars are done basically for you, for the investors, so that they can take an informed decision. So thanks so much, everyone. And we'll again connect tomorrow with a new brand opportunity and we'll discover new business. Thanks so much for joining us. Thank and you. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you. Good luck, everyone.